exactly, sir. is coming true. Right, I tell you what, yesterday was the foundation day of the Shiv Sena. I know we should have carried this yesterday. इसको हमें कल carry करना चाहिए था, प्रदीप जी. आज carry कर लेते हैं, with your permission. Yes, sir. प्रदीप जी, this is my very old interview with Balasaheb Thackeray. It's a classic interview. Wow. I loved that It's interview. fantastic, yes. I would love to show it to our new viewers again. This is the interview where Balasaheb Thackeray has never spoken like this before. So we leave you with a classic interview. And it's the right day actually to show this interview. जहाँ पर Because दो it's a rare masterpiece. दो शिवसेना हो गई हैं. Let's hear Balasaheb Thackeray, my dear friend, my most respected friend, and well, I don't know what he would think or what has happened to his party. I'm sure he would not be happy at all. मुझे नहीं लगता कि बालासाहेब ठाकरे आज खुश होंगे जहाँ पर भी वो हैं. Let's take a look. पूछना सर आपसे यह है कि अभी तक हर समय जब भी चुनाव होते थे ये देखा जाता था कि एक चुनाव को छोड़ करके बाकी हर एक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना जो प्री पोल सर्वेज होते हैं उसमें महाराष्ट्र में हमेशा जरा पीछे दिखाई जाती है एक चुनाव को छोड़ करके. इस बार यू आर सो फार अहेड दैट इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द कांग्रेस टू कैच अप, ऐसा लोगों का मानना है. तो इससे कहीं ऐसा तो नहीं है कि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के जितने वर्कर्स हैं उनमें देयर विल बी अ सेंस ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस, अ सेंस ऑफ लेथार्जी on their part? on their part? As far as I'm concerned, I don't believe in those poll strategies and whatever reports they publish in their newspapers. And you can have the taste of the pudding last time. What they publish and what happened, particularly those 4 states. That's right. Even BJP people never had an idea that they will win in 3 states and they will lose only Delhi, that's all. Perhaps it may be due to Khurana. If that would have been a good model, I think Sheila Dixit's position would have been difficult. खैर वो हो गई बात गई चले. तो ये अंदाज किया था 4 स्टेट का जी. बस क्या हो गया, कुछ नहीं. It was exactly the opposite side Or what the pre-polls had predicted, Yes. what the poll analysis. People just vote, they cast their vote. The prediction that there are so many astrologers nowadays today in newspaper offices, and they have got their own horoscopes and whatnot of each party. So sometimes, most of the times I can say that things go wrong, and as it has already gone wrong as far as the 4 states were concerned. In the state of Maharashtra, Yes. what do you think will happen? I think yesterday Udhav had gone to Nagar, Ji. and you will not believe, so much, the Maidan was packed to capacity. Manoj Doshi was surprised because usually it is my monopoly to Gather so many crowds. Yes, That's right. even today of course. But Udhav was also equally surprised. How's that? So many people attended. Pin drop silence. You see? As happens in your It was meetings. not Congress Jatra. As happens in your meetings. Of course, yes. Pin drop silence. I mean, they say that when you address a meeting, you're like a rock star. Applause and laughs and everything. So you taught Udhav all that? Or? No. Or you just learned it on I his don't own? have any institute in my house where I teach my boys or my Gharana people that they have to become this. No. There is no Thackeray Gharana. Absolutely not. No, I don't believe in that kind. I've watched you in Shivaji Park. I've watched you address so many meetings. Yes. Unknown to you. I've actually sat in the crowd. I don't know. I've actually sat in the crowd. And I've watched you deliberately stop in mid-sentence. And even though the entire Maidan is completely full, you can actually hear a pin drop. Pin drop. That's right. How do you manage that? That pause is automatically there because that is the reaction of the public.
the audience, and I always test. And they make me stop for a while. Let us read little and then go ahead with the thing. Yes. So tell us, I mean, this is something that I've always wanted to ask you. You were a cartoonist. Yes. You still are. You still can draw. My profession remains, but I don't draw nowadays because I'm not getting good models nowadays. All right. For my caricature. So we'll come to that. But tell me, how did you, where did you learn this from? Did you get it by instinct? Did you get it by practice? कि इस तरीके से public meetings को address करना, इस तरीके से जिसको कहा जाता है जनता को मंत्रमुग्ध रखना? That's my father is responsible for all of these things. Even we were staying there at Bhiwandi, and from Bhiwandi, when the Second World War started, we shifted to Mumbai in somewhere in 1938-39. 38-39 में आप यहाँ पर? Yes. जी. और हम जब भी स्थलांतरित हो गए यहाँ मुंबई में, तो मेरी माँ की एक इच्छा तमन्ना थी कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट बनूं. And my father was deadly against government servants. He said, no, you can be a dacoit, you can be a gangster, whatever you want. Don't become a clerk. That was his I think. But ऐसी कोई बात नहीं थी. He wanted me to be a musician. A musician? Musician. He brought bulbul, that old instrument. That's right. टाइपराइटर जैसा होता है, इधर ये तार छेड़ना और इधर दबाना, वो कीज. When he brought, he asked me to sit before him. I sat. He said, take this small cell-like thing and remove here and then press this. So when I used to start here, this hand never used to move. When I used to move this hand, nothing happens here. So he got wild, I said. जाओ, जोर से हाथ करके उन्होंने हिलाया, मगर वो सब तार मेरे इधर घुस गई रिस में, तो थोड़ा खून भी आ गया. मैं खून से नहीं डरता हूँ, लेकिन ये क्या है, तो थोड़ा बच्चा था, थोड़ा रोना शुरू किया. जाओ जाओ तुम जाओ, ये नहीं सीखेगा. पिताजी मुंबई में आते जाते करते थे, Mumbai, like that. But then one day he found, when he came to Bhiwandi, he found some tunes, something is coming from one room, side by room. So उन्होंने मेरी माँ को पूछा, ये क्या है, कौन बजाता है? तो बोले श्रीकांत. We used to call him Shri. वो बजा रहे हैं. अच्छा, बुलाने के बाद वो भी डर गया था. मेरे पिताजी तो जबरदग्नि थे बिल्कुल, बड़े तेक. तू बजा रहे हैं? तो हाँ, बैठो. एंड देन ही स्टार्टेड सेइंग सम ट्यून्स और सम कोई तबला जैसा होता है ना, राधिकता और ट्यून्स उन्होंने निकले. एंड ही प्लेड. द फर्स्ट सॉन्ग इज ऑलवेज दोज हु लर्न दिस इंस्ट्रूमेंट्स दैट टाइम, जाके मथुरा या कान्हा ने. ये पहला गाना शुरू से होता है. तो कान्हा क्या, मथुरा किधर, पता नहीं. तो ये हो गया, तो उनको पता लगा कि ये म्यूजिशियन होने वाला है. नहीं, वो हो गया अभी दुर्भाग्य से वो गुजर गए जी, श्रीकांत जी. बट ही वॉज अ टॉप मैन, a terrific musician. He sung about 11 to 12 Marathi songs from Muhammad Rafi. Yes. He had a Urdu knowledge. He used to write Urdu wonderfully nice. Good handwriting. खैर वो हो गया. तो मेरा क्या होगा, वो तो चिंता थी जी. मैं पिक्चर निकलता था, कभी कागज़त पर, कभी दीवार पर. तो देखा पिताजी ने. जब हम मुंबई आए तो बैनबेरीज कार्टून्स यूज्ड टू अपीयर in times of India at that time during Second World War. I got the collection. तो अंग्रेजी तो आती नहीं, मगर देखता तो रहते हैं. तो पिताजी ने कहा, ये वॉच क्या है, कैसा लगा, ठीक क्या, पसंद है? तो हमेशा मैं ऑफिस से आऊँगा
तभी जैसा निकाला है वैसा निकाल के रखो, पेंसिल ड्राइंग। मैंने कहा कि ठीक है। जब ये आते थे, उस वक्त हम मुंबई आए थे, तो उन्होंने पूछा क्या आज कुछ किया है क्या, स्केचिंग वगैरह? तो बोला हाँ, बताते थे। देन ही विल कॉल फॉर द टाइम्स कॉपी एंड पुट दैट माय स्केच बिफोर हिम। ये कैसा लाइन गया, तुमने कैसा किया, तुमने ये कैसा किया, ये कैसा, आँख कैसा, ये करके करके उन्होंने मेरी पढ़ाई शुरू की। करने के बाद एक दिन उन्होंने इंक एंड ब्रश लाया, उन्होंने कहा अभी इससे शुरुआत करो। You remember the brush or? हम दो that there were no Winston Newton and all kinds of things, you know, they were very costly things. In today's they are worse costly. But I started inking the thing. पहले जमता नहीं था, कभी ज़्यादा इंक आती थी, कभी कम पड़ती थी, सब करके करके I developed as a cartoonist then. But how did you learn how to speak? How did you learn how to That is address people? that instinct, I can say. That is my father. I used to listen to all people like my father, Comrade Dange, Acharya Atre. All these were my say icons or idols and whatnot. You know. But as a young man, you were a very rebellious young man. You're still a rebellious young man, of course. But No, I when think- you were I younger, think- you were no, rebellious. You were even more no. rebellious. I have been forced to become a rebellion. I was not. I was. You never conformed. Like you said, your mother I wanted don't- you to become you know, a government servant. No astrologer would have predicted that though I am a cartoonist, my profession will change into this. Neither I knew it. No, I did not. The sudden change. So how did that come about? I joined Free Press as a contributor in 1945. Then I left. Then again I joined in 47. But somehow I did not like that tendency, attitude. Mr. Sadanand, they were giants. Sadanand, Horniman, Relvi, all these people. That's right. And now there are no such journalists in today's field. That those ethics have also gone, in fact. So he will ask me to sit in that corner. That is your corner. I said, okay. He will change the furniture in night's time. Then he will make his cabin there. And he will ask other people to shift over there. And so on and so on. Every day, in a week, twice or thrice. So then I had that thing. But the chap was called Mitra. Nasty fellow, but साधारण का आदमी। वो ऐसे करते थे कि मुझे बताया वहाँ बैठने को, तो भी he will put me in telephone operators thing, my table and everything, and to read newspaper and concentrate and then cut, yes, hello, hold on, क्या है? तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि मित्र ये जगह ठीक नहीं, नो बट यू नो हाउ व्हाट कैन आई डू, देयर इज नो अदर प्लेस। मतलब वेयर दैट सदानंद टोल्ड मी, वे सदानंद ने कहा है कि यहाँ बैठने को, तो आप मुझे हिलाते क्यों यहाँ से उधर? नहीं, नो डोंट आस्क मी दैट। मतलब ओके, आई रिजाइन इन 47 I was there. Lakshman came the same year in 1947. He was there. We were two cartoonists. But then somehow in 50 I left. 1950. But it's amazing really that you can still talk in such glowing terms about Sadanand in spite of the fact Yes. that he was unfair to you. I said these people were giants. Today we see pygmies only. छोटे लोग। तो बाला साहब ये बताएं कि आप, because this is amazing, I mean really, because Sadanand was never nice to you from whatever I've read. No. He was never nice to you. In spite of that, you're praising him. In spite of that, I have never heard you say a nasty word against him. I can cite one incident, whether it was good or bad. 2 years, 1952-52, I was doing freelance.
was there in Film India. At that time it was Film India, Baburao Patel's. That's right. I started drawing cartoons in that In Film magazine. India. Yes. Baburao used to come to our house there at Dadar. Another institution. Yes. Terrific man. I mean, he was also a great journalist with a simple English. No idioms and phrases and nothing. No frills. Absolutely. See the language. Even Sadanand, his editorials were just one line. And very well thought out, very articulate. Absolutely. Ji. Very much. Ji. 52, early in the morning at 8:30 or so, bell rang, doorbell. My father opened the door, said, "Thackeray साहब है?" That driver asked my father. हाँ क्या है? वो सदानंद साहब आए हैं. जब भी सदानंद का नाम लिया तो पिताजी को पता लगा कि मेरे लिए आए होंगे. उसका क्या है संबंध? तो उन्होंने मुझे कहा कि सदानंद आए हैं, देखो क्या है. तो मैंने ड्राइवर को पूछा कि अरे साहब को अंदर तो ले आइए. साहब वो बीमार है. Then I went out. He kept the car, that right side of the car door open. His daughter Uma was there. He was sitting in the middle, and then one seat was vacant. You can call it a reserve seat for me. So he cut my hand and pulled me in. Sit. What are you doing? I'm doing my freelance work. How much you get? There's no limit actually. Sometimes I get more, sometimes I don't. You see, I have become old now. You are the pioneer of my institute. And at this age, if you are not going to help me, stand with me, then what's the use of that? Sir, anything you want to say, please. How much you want? The money is not a problem. Anything you give, I will accept. 500, 600. Sir, I am not going to bargain with you. I will just, okay, you come tomorrow to Taj Hotel. Because I am not staying there at Pedder Road. Today it is Dr. Deshmukh Marg, that is Pedder Road old time. मैंने कहा कि ठीक है, मैं आता हूँ. My room number is so and so and so and so. I went there at about 9:30. Ji. At that time, these elements were not there, tummy problem and all this. I went there, I rang the bell. Baba, his son, opened the door, Prem Kumar. Yes, Mr. Thackeray. I have come to see your Pitaji, your dad. No. Doctors have not allowed him to see anybody, neither, no visitors, please. The board was there on the door. ठीक है. So tell him I came and gone. It was my courtesy visit, that's all. Okay. Turn my back, I was about to go out in the passage. He shouted, Sadanand. He heard my voice. Baba, who's that? Thackeray. No, call him in. Baba came running and said, Thackeray, Mr. My dad wants to see you. I went in. Good morning, sir. Namaskar. Sit down here. How much you want? Hello, sir. I'll give you 600. Sir, I leave it to you totally. You decide anything, I will accept just because of you, sir. Now the management is changed. So you have to meet one Mr. A.B. Nair, the man who was the managing director of that Free Press Group of India, that publicity, associated publicity. Ji. Yes, that Sadanand started. The Karnani group from Calcutta, they taken over that thing. They had more shares than Sadanand. And then I went to see one Mr. D.N. Nadkarni. He was the oldest friend, right from 45
because he was the oldest even in Free Paris group. And Sadanand's most trusted person. बहुत ही विश्वास इस पर. जो कुछ करना है वो नाटकनी से कहो, जाके बोल दो. I went, Natkani took me to A.B. Nair, the man who had got that Nair's colony at Juhu. Yeah. That one, that Nair. He did not know anything, any ABC of journalism, but though he was AB and no ABC of my journalism. But managing director, good morning, sir. Then Natkani introduced him to me, Mr. Thackeray. Yes, Mr. Thackeray. You are Mr. Thackeray? Yes, I have been introduced as Mr. Thackeray to you by Mr. Sadanand. Oh, please sit down. You know, we have a problem. We don't pay so much salary to anybody. Mr. M.V. Kamath, now Our MP Kamath. Yes, he has got all grey Yes. hair. M.V. Kamath is The chairman of Prasar Bharati. Prasar Bharati, and then UNO and all kinds of That's things right. after that. He said, even we don't pay M.V. Kamath that much salary. I said, sir, I have not come here to discuss my salary with you, and neither I'm interested how much everybody is getting. If Sadhana requested me, and I have come, and he fixed my salary 600. Now, any problem is there, either you talk to Mr. Natkani or straight to Mr. Sadhana, and they will solve the problem. When are you going to join? Tomorrow. Okay. I'll speak to Mr. Natkani. I left the chamber, came back to Natkani. They said, अरे छोड़ो ते बाबा, तुम्ही कशाला परवा करता? मी बाहेर मी बघतो. बरं बघा. ते झालं सगळं. I joined Free Paris Journal. Up to 52 to 59, I was there. Lakshman left in 53. That's right. No, 49, sorry, 49. Lakshman worked over there for 2 years. 49, That's right. he left. After that, I left. No, I immediately in 50, I left. 50 to 52, I was doing freelance. 52 to 59, I was with Free Paris Journal. Then suddenly, when this man started becoming more active, A.B. Mr. Nair, A.B. Nair. Haire Haran was the editor. So, they made a rule, even my rough sketches, cartoons, unless and until managing director censors that, only then I have to ink it and finalize the thing. Even your rough sketches. Rough sketches. So you experienced the emergency before the emergency. No, emergency came in 50, It 75. came in 75. Yes. So you experienced censorship At even that months time, yes, before that. yes. But what I did, तो मैंने मेरा कार्टून हो गया स्केच पेंसिल स्केच आई कॉल मुद्दू ही वाज सदानंद's प्यून ही बिकेम ऑटोमेटिकली हिज प्यून ऑल्सो એટલે मुद्दू ये साहब को बताओ डू कार्टून ऑन एसके पाटिल मुद्दू के साहब बुला रहे हैं आपको आई वेंट Good morning. Good morning. Please sit down, as usual. Mr. Thackeray, do you know Mr. S.K. Patil? Well, sir, I don't know. Only I know that much thing that he's a politician. I have not seen him personally. मैं इतना ही मानता हूँ कि वो एक कोई राजकारणी पुरुष है. And whenever I get some news, I draw. No, he's a very good man. I will introduce to you one day. It's all right. But don't touch S.K. Patil. I came back with my sketch. Then I do a cartoon on Minu Masani. I was called again in. Good morning and sit down and all kinds of things. Yes, sir. क्या है? Do you know Mr. M.R. Masani? Sir, as I told you long back, last time,
कि किसी की भी मेरी पहचान नहीं है। वो अखबार में जब भी उनकी कुछ बातें आती हैं तो उस पर मैं कार्टून निकालता हूँ, इफ दैट सूट्स मी। नहीं, वेरी गुड मैन, एंड आई विल इंट्रोड्यूस यू टू यू सम सेम ओल्ड थिंग। आई वाज रियली फेड अप, आई वाज फेड अप। गुस्सा आ गया। आई केम बैक, आई कॉल मुत्तू को बोला टाइपिस्ट को बुलाओ। ये कॉल टाइपिस्ट, मतलब मेरा रिसिग्नेशन टाइप करके ले आना। वाई आई वॉन्ट टू रिजाइन, आई डोंट वॉन्ट टू स्टे हियर। I typed the resignation, my signature went to Nair. And then editor, Mr. Hariharan, called me. Yes? Hey, what is this? You gone mad? But if I, sir, remain here, I may go mad. I may become mad, I said, at least. No, I am not going to. You accept or reject or tear it off. I am going. I just took my bag and came home. And they couldn't change your mind? No. So nobody's been ever able to change your mind since then? No. Though I have a mind, but nobody changed. So nobody's been able to change your mind? Nobody can. Once I take the decision, not like your Sharad Pawar. शरद पवार जी अपना मन बदल लेते हैं बार बार? शरद पवार जी, मेरा मन? अपना मन? अपना मन उनका? जी। काफी टाइम, आई मीन नॉट वंस। यही जो नई बात करनी हो तो ये that is a wrong thing. He did not leave Congress. He has been kicked out from Congress because when he saw after the election Sonia Gandhi going to the Rashtrapati जी, and कुछ गड़बड़ हो जाएगी, she will become the president, तो मेरा क्या होगा, यानी उनका। And he immediately declared that we will not allow a foreign lady or any foreigner to become the prime minister of this country. Okay. When she heard, उन्होंने निकाल दिया ये शरद पवार, संगमा और तारिक अनवर जी, इन लोग को निकाल दिया। छोड़ा नहीं, निकाल दिया। मगर हमेशा प्रचार किया जाता है कि उन्होंने खुद छोड़ दिया। नहीं, हिम्मत नहीं उसकी जी। फिर भी वो ये कहते हैं कि क्योंकि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ गई राष्ट्रपति को मिलने के लिए और उनको नहीं लेके गई, तो इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। उनका आपस की बात है, मैं क्यों निपटूं इसमें। ये बात ये नहीं, क्यों नहीं, क्या नहीं, वजह क्या, उस छोड़ दीजिए बात। लेकिन ये हो गया। When you declare one thing and today you are going back to Sonia Gandhi, वो भी पाँव से चल के उनके बंगले पर गई, वो भी घुटन पर चलते चलते उधर गया। और जो उन्होंने बात कही कि हमारा जो मैनिफेस्टो है इसमें विदेशी मुद्दा नहीं आएगा जी, मगर हमने विदेशी मुद्दा छोड़ा नहीं। ऐसे after remaining so many years in politics, I don't know the exact meaning of this, what he wants to say. Whether after election he is going to say the same thing, repeat the same thing, or it is forever, as far as the manifesto is concerned. What is the truth? इससे पहले he was having some kind of a understanding with BJP. काफ़ी वहाँ उठबस चल रही थी दिल्ली में, आडवाणी से मिलो, महाजन से मिलो, इससे मिलो। मैंने देखा कि आज तक हमने इतनी गालियाँ दी उनको, बहुत गालियाँ दी, और इतनी गालियाँ देने के बाद वापस उनके साथ बैठूं। कल चुनाव आने वाला है जी। लोग क्या कहेंगे, अरे आज ये बात है दोनों साथ मंच पर, तो गालियां क्यों दी, ये कैसा है। मेरा जो विश्वास है, लोगों का मेरा पर विश्वास है, वो उड़ जाएगा, वो नहीं। मैं संभालता हूँ दो चीज़ें, ये तत्व और सत्व, दोनों को मैं कभी नहीं छोड़ा, ना छोड़ूंगा जी, कभी नहीं।
बहुत कड़क रहा हूँ इसमें। तो मैंने कहा कि ये नहीं हो सकेगा और करना है तो चलो, ये लखोबा जो है भुजबल उसको निकाल दो। आप वैसे कहें तो मैं कहूँ आई वांट शरद पवार इन द ट्राइब एक्चुअली, आई वांट वेरी मच, आई वांट इट, क्योंकि if he would have joined us, SENA and BJP, he would have been fully exposed. You see, fully. How? You were attacking us that we are secularist, we are, हम धर्मांध है, हम जात्यंध है, हम जातीयवादी हैं. जी, that you are communal. Now you are coming with us. That's right. So what happened to your, what you said, uttered earlier? चला गया. But because I put that one condition, which I was absolutely sure this will never take place, and this so-called alliance which they wanted with Sharad Pawar will break, and it has broken. But very strange, the BJP actually approached you and said that they wanted this alliance, which is very strange. Their idea was that they wanted a strongest government in Maharashtra. ये जो पार्टी मिलके जी वाजपेयी साहब को कितनी तकलीफ होती थी, मगर वेरी स्किलफुली हैंडल. That's right. Skillfully handle, you know. But then so did your chief ministers here when 4.5 साल जब It is आपकी not a सरकार question चली. of support निकाल देते तो गवर्नमेंट गिर जाती. जी ये तुम्हारी डेमोक्रेसी है. आज कितने के लोगों को संभालना, कितने का मूड संभालना, कैसे टिकना, ये झंझट कौन करेगा हमेशा, हर दिन हर वक्त. अरे नहीं बाबा जाओ जाओ जाओ, अरे नहीं बाबा जाओ जाओ, तुमको ये सीट जगह देते, तुमको ये बनाता है तो उसको. लेकिन महाराष्ट्र में अभी भी करना तो वही पड़ेगा, क्योंकि एडजस्टमेंट तो करनी ही पड़ेगी. अभी ये तो काल ही ऐसा आ गया है. जी Today we are facing the same thing. There will be no one umbrella government in anywhere actually, except certain regional states like Andhra, Tamil Nadu. You know, बस बाकी क्या है. बाला साहब ये बताएं कि जब पिछली बार आपकी सरकार आई थी तब आपने ये कहा था, मुझे याद है, और चुनाव प्रचार के दौरान भी कहा था कि जो 5 एसेंशियल कमोडिटीज हैं उसका दाम आप बिल्कुल कांस्टेंट रखेंगे, और काफी हद तक उसमें सफलता मिली यूपी सरकार को. इस बार कोई ऐसा मुद्दा आप सामने ला रहे हैं जहां तक के विकास का सवाल है, डेवलपमेंट का सवाल है? एक तेलगी है, बस हो गया. कितना तेल चाहते हैं आपको? एक तेलगी बस. आपको लगता है कि सिर्फ तेलगी की वजह से ही कांग्रेस और एनसीपी की सरकार उड़ जाएगी और कांग्रेस एनसीपी वापस नहीं आएगी? It will be difficult for them to face that bomb shelling. आज पवार साहब ने कहा है कि वो ये भी लोग शामिल थे. जी अरे भाई है, मैं तो नहीं, कभी नहीं, ऐसी बातें तो मैं कभी नहीं करता हूँ किसी के साथ भी, ना किया ना करूँगा. मानो कि हमारे राणे हो, मुंडे हो, और कोई हो. मैंने तो मुलाकात में मैंने कहा है कि फांसी के फंदे पर चढ़ा दो उनको, मैंने ये करूँगा. भले ही मुंडे साहब या राणे साहब. To have a photograph with anybody, Yes. any gangsters or a dacoit or even a man like a Telgi, that is not an evidence as such. कि देखो ये तेलगी का है, ऐसे कहें तो पवार साहब का भी तेलगी के साथ फोटो है. अभी क्या करें, क्या करें? Can he answer that? Can he challenge that photograph? नहीं, फोटोग्राफ का होना तो कोई एविडेंस होती नहीं है, वो तो पब्लिक मीटिंग, public life, you meet so everybody. many people That's right. come and garland you. That's right. You know, so it doesn't mean that I belong to them or he belong to me. But the fact is that as far as the NCP is concerned, specifically the NCP, कांग्रेस के लोग इतना नहीं बोल रहे, लेकिन जहां तक NCP का सवाल है, उनका अटैक यही हो रहा है कि तेलगी मामला जो शुरू हुआ, जो स्कैम शुरू हुआ, वो शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान शुरू हुआ. वो उनका ये कहना है. ठीक है, जवाब ये है इसका, कहाँ से शुरू होगा ये मामला. एक अनिल गोटे नाम का ये है MLA जी, उनकी कोई तेलगी के साथ दोस्ती होगी ना होगी, बट ही वॉज एन इंडिपेंडेंट. और हमारे साथ वो लड़ा चुनाव में,
हम हारे और जीता and he became the MLA. कोई जब भी तुम्हारे पार्टी में आते हैं तो एक बोझ आता है थोड़ा तो, एंड इफ ही रिक्वेस्ट कि ये मेरा दोस्त है, उसका एक ये काम है, और उनके खातिर वो सिग्नेचर करते हैं और कोई मान्यता देते हैं। इनमें से ये तो नहीं कि तेलुगु का पैसा लिया और खाया, जैसा कोई अशोक चौहान का भी नाम आता है जी, इसी शंकरराव चौहान के लड़का, ऐसे तो नाम आते रहेंगे। मगर इसमें हमारे से ये मामला शुरू हो गया, हमने शुरू किया, ये युवती ने शुरू किया, ये झूठ है। लेकिन उसमें अभी विलास राव देशमुख का नाम है जी, रेवेन्यू मिनिस्टर वो थे। हाँ, जब उन्होंने उनको जब परमिशन जो दी, तो स्टैम्प पेपर वेंडिंग की जो परमिशन मिली, आना दो ना सब चीजें बाहर, क्यों नहीं लाते? इट वॉज आई हु शाउटेड दैट कि इधर ये क्यों कर रहे हैं, अब तलाशी क्या चल रही है इधर, पहले वहां जाओ, ये तुम्हारे सिक्योरिटी प्रेस जो है जी नासिक में, वहां जाके देखो ये मशीनें कैसी बाहर आई हैं। द रूल इज, इट इज अ वेरी स्ट्रिक्ट रूल, व्हेन यू वांट टू डिस्कार्ड एनी मशीन you cannot auction it, sell it, you have to melt it. You have to destroy it completely. Not destroy, but melt it. That's right. Not a small thing goes. Here the machine and the dyes and everything gone. That's right. Including the paper. Who is responsible? Sub. Here they say the responsibility also lies with the Union Finance इनका तो Ministry. गवर्नमेंट था और है भी आज। They also say with the Union Finance Ministry. Okay, that comes under the Finance Ministry in Delhi. करो ना, करो पूछताछ। मैं क्यों ये करूँ आपको कि नहीं मत जाओ, वो सिन्हा हमारा आदमी है, जरा या हम मुझे नंगे हो जाएंगे, ऐसे तो कोई बात नहीं। आई एम लिस्ट कंसर्न एंड बॉदर अबाउट दिस दिल्ली अफेयर। तो यानी बाला साहब जो आप बोल रहे हैं उससे लग तो ये रहा है कि जिस तरीके से बोफोर्स मामले के बाद राजीव गांधी की सरकार गिर गई थी और वीपी सिंह की सरकार बनी, आपको ये लग रहा है कि तेलगी की वजह से कांग्रेस और एनसीपी का सफाया हो जाएगा महाराष्ट्र से? इनके सफाई के कारण काफ़ी हैं, बहुत ही हैं। अभी टू स्टार्ट विथ सीबीआई क्या करते हैं और हमारे कोर्ट के मामले होते हैं जी। अभी बॉम्ब विस्फोट की जो बात है, केस है, बाबरी मस्जिद की केस थी जी, आज 12 साल वो इसमें गिर पड़ी है, पहले कोर्ट में फैसला नहीं होता है। व्हेन एवरीथिंग इज सबमिटेड टू यू, मोस्ट ऑल द एविडेंस इज फ्रॉम हिंदूज एंड मुस्लिम्स, व्हाई डोंट यू टेक द डिसीजन कि नहीं भाई वो इनका मजबूत है, ये कहते हैं वो ठीक है, इसके वो मस्जिद ही थी, राम मंदिर नहीं था, और वो कहते हैं हिंदू कि यस राम मंदिर वॉज देयर, हियर आर सर्टन पार्ट्स एक्चुअली, और पुराने कोई चीज़ें मिली है, तो ये हिंदू मंदिर था, इसके ऊपर बाबरी आ गई। कुछ कहो ना जी, चाहे इनके फेवर में न्याय जाएगा या हिंदुओं के फेवर में का न्याय जाएगा, मत देव तो देना, कोई नतीजा तो आना चाहिए ना, फैसला कोई आना चाहिए सामने। 12 साल इसके वजह से सब बिगाड़ा होता है। नाउ वी डोंट नो वेदर दिस मैटर बाबरी मस्जिद इज ए पॉलिटिकल मैटर और ए रिलीजियस मैटर, नॉट आंसर्ड बाय एनीबॉडी, यू नो। फर्स्ट इट वाज डिस्कस इन पार्लियामेंट, That's right. पार्लियामेंट के बाद नरसिम्हा राव ने कहा खटमल हमारे कंधे पर क्यों डाल दिया, उसके कंधे पर, कोर्ट के कंधे पर, कोर्ट के कंधे पर बस। So what would you like done over there? I said it once, but now I don't. I want Ram Mandir there. I will now insist that it should be there then. If they are not prepared to take any cognizance of that, which should have solved the problem. And the idea was, किसी को जागा मत देना, हिंदू को एक अधिकार है मंदिर का, because it is a rightful demand of Hindus that हमारे राम मंदिर पर है, then there is a मंदिर there. That's right. Last 55 years, Muslim did not go there and had नमाज, नमाज पढ़ा भी नहीं हुई वहाँ उस जगह पर, क्यों नहीं? और 55 साल से वहाँ पे आरती हो रही थी, आरती को जी, और पहला ताला लगाया था और राजीव गांधी ने खोल दिया और पूरी शुरुआत हो गई जी। ये तो साबित होता है जी कि हिंदुओं का है, पुजारी भी बैठते हैं उधर, तो हिंदुओं को एक जगह मंदिर के लिए उधर दो।
मुसलमानों को देना है तो कहीं और दूसरी जगह पर दो। और जो बात रही द कंट्रोवर्शियल स्पॉट जी, जमीन, उस जमीन पर एक नेशनल पार्क बना दो, नेशनल पार्क, और वो पार्क का नाम होगा मंगल पांडे। मंगल पांडे पार्क, मंगल पांडे पहला शहीद जी, आजादी 1857 के गदर का जो यस पहला, जिसने 1857 जी, फर्स्ट इज शॉट, फर्स्ट बुलेट ऑफ योर इंडिपेंडेंस, दैट्स राइट, फ्रीडम ऑन ए ब्रिटिशर, इसका नाम दे दे मंगल पांडे। दैट वाज योर प्रपोजल, आई स्टिल रिमेंबर, I यस, gave it about That's right. 10 years back. करेक्ट, बट नथिंग वाज डन। No. ये है डेमोक्रेसी, नो जस्टिस, डेमोक्रेसी। बट सर, एज फार एज I often tell people, जाति पाति तो मैं नहीं मानता हूँ। जितने लोग मेरे उम्मीदवार के हिस्से से आते हैं, किसी को भी मैं जात नहीं पूछता हूँ, किस कहूँ का क्या, किस जात तेरी, ठीक है। मैंने कहा कि ए टाइम वॉज देयर दैट वी यूज्ड टू कास्ट our vote. We used to cast our vote. And time had changed. Now you have to vote for a caste. now you have to vote for a caste. Yes. That's the difference in the time between two zamanas. At that time, no casteism. Can we ask you to reply on this in case you are willing to do so? What? Who will be your chief minister when you come to power in Maharashtra? ये मैं खेल नहीं खेलता। काफ़ी लोगों को they're dropping saliva of that. Sir, since we really are running out of time, and I know you have another meeting. Chief ministership किसी की monopoly नहीं होती है। Correct. I want a man who will do justice to the people, those who get you elected in power. I want that first. लोगों का विश्वास मत करो, विश्वासघात मत करो। जी। Yes. Don't step in their back. बड़ा साहब, अभी तक आपने शुरू से यही कहा है और आपका स्टैंड बिल्कुल कंसिस्टेंट रहा है। हाँ, बिल्कुल। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जहां तक रिलेशनशिप का सवाल है, अभी क्रिकेट टीम वहां खेल रही है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कहना, जाए तो सही, एक जीता एक हारा, एक जीता, चलो हार जीत तो ठीक होती है, जैसे कि चुनाव में होती है। कभी आप बैठे, आपके सर पर हम बैठे, हमारे सर पर आप आए, तो क्या चलता है। अभी कोई नहीं तो गोविंदा को बुलाते हैं, अरे गोविंदा आके हंडी तोड़, साला फोड़। राम नायक के खिलाफ गोविंदा, हाँ, आला रे आला, और न जाने किसी और के खिलाफ कौन कौन, पता नहीं। तो ये जो बात है क्रिकेट की, मैंने जब भी वो जाहिर किया, इट वॉज इन 1992, हमने वो वानखेड़े स्टेडियम की पिच जो है वो पिच जो विकेट है वो उखाड़ दिया हमारे शिव सैनिकों ने। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उस वक्त, उन्होंने सवाल पूछा कि आपके शिव सैनिकों ने वो वानखेड़े स्टेडियम, नेक्स्ट डे द मैच वाज टू बी प्लेड बिटवीन हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान, नेक्स्ट डे खेलना नहीं, उन्होंने खोद के डीजल ऑयल डाल दिया, जो कि उसको रन्स निकालने में जल्दी जरा स्पीड में आएगा, इसलिए डीजल ऑयल दिया। इतना तो हमारे शिव सैनिक करते हैं। इसी तरीके से एक बार दिल्ली में भी पिच खोदी, दिल्ली में कोटला ग्राउंड खोद दिया, जिसकी वजह से अनिल कुंबले को 10 विकेट मिली सर। यस, एक इनिंग्स में। इट वाज ओनली ज्योति बसु हु कॉल्ड द टीम एंड हैड ए मैच देयर एट ईडन गार्डन। यस, बाकी मैं नहीं, कभी नहीं। Are you still sticking to your stand then? That Yes, my stand is there. Pakistan should not play in India? No, no. It's unless and until they stop that Kargil thing, mischief, and this terrorism in the country, the network, ISI and SEMI and Toiba, Taliban, nothing doing. जो विस्फोट होते हैं बीच में, जी, कितने लोग मारे गए? गेट ऑफ इंडिया, that's right. हमारे संसद पर हमला, क्या बात है? And we shamelessly watch the match. If match is going to bring peace, तो एक ही काम करो ना, हमेशा जो बॉर्डर है LOC वगैरह वगैरह, उधर ही मैच खेलते रहो।
सो जो टेररिस्ट है वो भी देखते रहेंगे, वो भी देखते रहेंगे, हम भी जाएंगे, और पीस शांतता होगा ना उधर। तो पॉलिटिशियन की कोई जरूरत नहीं। लेट आवर बॉयज प्ले क्रिकेट एवरी डे, लेट इट बी वन डे but play. Yes. Wonderful, absolutely wonderful. Maybe we should try it. I'm not against game cricket, no. इस जैसे कि कहते हैं अंग्रेजी के बारे में काफ़ी ये होते हैं, अंग्रेजी बंद होना चाहिए, होना चाहिए, मूर्ख बना है। यू कैन हेट इंग्लिश और इंग्लिश, That's but right. don't hate the language. You know, don't hate the language. You can hate the Pakistani team or whatever it is, but not the cricket. Sir, the parliament elections are due this time. Yes. The Lok Sabha elections are due. In 95, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की जो युति थी, आपने 31 सीटें जीती थी out of 48. 33. All right, 33, not 31, 33, right. It was between 31 and 35, I remember, so 33. How many seats do you expect to win this time? Just a wild guess, sir. No, rather difficult to assess. Will the performance be better than last time? गवर्नमेंट की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस तो वर्स्ट। The Maharashtra never experienced such a bad government, you know. That apart, as I told you in the beginning, that Udhav had been to Nagar and That's he had a terrific, a huge meeting, mammoth. So that you think will be translated into a bit of a landslide? If crowd has any meaning, not Yes. all the time, but I can give you a guarantee that effect, keeping quiet, silently listening to the man or leader, then road show. तो रोड शो तो हल्ला गुल्ला होता है, क्या है, कौन नजदीक से क्या देखना। दिस ट्रांसफर ऑफ योर स्टार कास्ट, जी, हमेशा क्या होता है, कल जो कांग्रेस में थी और था वो अभी बीजेपी में, और जो बीजेपी में थे और थी वो अब वो कांग्रेस में, और वी फॉर विक्ट्री करते। किसकी विक्ट्री? तुम्हारे आने जाने की और क्या। और शरद पवार ने कहा कि हमें कोई जरूरत नहीं। अरे आपके पास तो कोई नहीं आते, बिकॉज यू आर ए बैड प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर एंड नोबडी विल बिलीव एंड ट्रस्ट योर एग्रीमेंट। कि साला पैसा देगा ना देगा। राइट। बाला साहब, एक आखिरी सवाल चलते thank चलते। I know we've really stretched you out today, but there was a rumor of a bit of a problem as far as Udhav and Raj are concerned. What is it? In terms of the fact that everybody talks about the tension between them. No. Is there any tension? No. Absolutely not. So that is a creation of the media. That is including Raj, us. only problem is Raj stays there at Dadar. Ji, And Udhav is available here. that's right. He stays upstairs and I stay on a second floor. So it is amenable actually. I mean, he can come discuss things with me. When Raj comes, and if he is called for, he attends. He attends all the leaders' meetings. Wonderful. Yes. Right. So there is, and they have declared. How many times you want them to declare the same statement again and again, till you get satisfied? You will never get satisfied. We have got that guarantee. They have said, Ji. and I am saying it again and last, that is, if there is going to be any hitch or any problem between us, we will not disturb the relation. We will leave politics, but we will maintain our relation. That's wonderful. That is clearly said. Absolutely. And it appeared in the newspapers. Balasaheb, thank you very much for granting us such a long interview. So nice of you, sir. Thank you very, very much. And we must thank you again for the fact that you left Mumbai for the first time in 10 years only to come to Lucknow. You know, my For two that also, we elements must are, thank you. if they would have not been there, I would have went on touring. I will. And I have to move now That's right. for my propaganda. I have to. Correct. तो यानी आप प्रचार करेंगे. In 1990, I have taken 164 meetings in Maharashtra. That's right. 90. जवानी थी उस वक्त जरा, और भंडारा तक मैं गया था. आप 95 में भी गए थे, मुझे याद है. 95 में, मगर उद्धव ने कम कर दिया हमारा कोटा. और इस बार I have taken so many meetings, but
nights, dinner, I used to take early in the morning at 5, 5:30, 6 o'clock. Early in the morning, the dinner. That's right. The lunch in the evening. So much so. And there was no restriction that 10 o'clock प्रचार बंद नहीं. कितने बजे भी चलती रहती गाड़ी. When I reached Kandahar at 2:30 early in the morning, people were sitting on footpath and roads and all, waiting for me. And so this time, how many meetings do you plan to address? कितनी meetings? At the most, I may go up to 15. 15. Yes. They are making the chart actually. और हम अपने दर्शकों से वादा करते हैं कि बाला साहब की जो भी मीटिंग रहेगी उसका सीधा प्रसारण आपको जरूर देखने को मिलेगा. धन्यवाद. Thank you, sir. Thank you very much again, and all the very best for the election, sir. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जय हिंद, sir. Thank you. जय महाराष्ट्र. Yes. Thank you, sir.